हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा है तो मैं वेम्बनाड लेक घूमने के बाद सीधा एलेपी बीच आई, जहां मेरा होटल बुक है। एंड आई गॉट दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय रूम। और चेक इन करते ही बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा बीच पर निकल आई। बीच के पास बहुत ही सारे होम स्टे एंड रिजॉर्ट्स है। लाइक यू कैन सी बिहाइंड मी इट्स अ फुल लाइन ऑफ होम स्टे। और मैंने मेरा ये रिजॉर्ट बुक किया सिर्फ एक ही रीज़न के लिए, जस्ट फ्रॉम दैट्स माई रिजॉर्ट एंड आई गेट दिस व्यू। So this is Alleppey beach and there is no crowd at all. Actually people suggest go to Marari beach, but this is Alleppey beach and oh my god, it's lightning. I'm really a believer. It's raining in Alleppey. Guess I never dared to know myself. Could my heart be quiet? Then there was you. Then there was you. Put me out of the I didn't get to see the sunset, but the weather is 10 on 10. The view is so beautiful. Black clouds all around me and I don't see the sign of sun, and this is purely beautiful. So guys, this is Alleppey beach. Capital letters. In capital letters. Well, I probably should head out to my hotel because now tides are getting higher and rain is now also very fast. It's raining heavily, so चलो रनज भी बहुत गीला हो गया है। So let's go. तो मैं वापस रूम आके गरम गरम चाय पीते हुए बारिश रुकने का वेट कर रही थी और देखते ही देखते शाम हो गई। अंधेरा बस होने ही वाला था तो हम स्नैक्स के लिए कैफे कैटामरन गए, जो मेरे होटल से सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। जितना अच्छा यहाँ का खाना और व्यू है, उतना ही अच्छा और जेनरस यहाँ का स्टाफ भी है। रात को फिर से बारिश शुरू हो गई तो हम होटल वापस आके बस यही आराम कर रहे थे। फाइनली सुबह हो गई। मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम एलेपी बीच। अभी मैं फिर से बीच पे आई हूँ क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और बारिश की वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पाई, लेकिन बीच और बारिश दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन था और मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अभी मैं देखती हूँ कि मुझे कलरफुल स्काई देखने को मिलता है फिर से एलेपी बीच पे या नहीं।
ये जो पियर्स देख रहे हैं ये लगभग 150 साल पुराने हैं। ये बीच मुझे बहुत पीसफुल लगा। कोई रनिंग कर रहा है, कोई फिशिंग या कोई फुटबॉल खेल रहा है या वॉलीबॉल। मॉर्निंग वॉक या योगा के लिए ये पूरा परफेक्ट प्लेस है। और हाँ, मेरा कैमरा लेंस कभी कभी लोकेशन से हटकर एनिमल्स पर जूम हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा एक्सक्यूज मी। इस बीच पे टूरिस्ट के लिए पैरासेलिंग, जेट बोट राइड्स और काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है। कल बारिश की वजह से जो टाइम मुझे होटल में रहना पड़ा वो मैंने अभी पूरा वसूली कर लिया है और बहुत अच्छे से एलपी बीच एंजॉय कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गो टू कोची, सो सी यू देयर इफ यू सी माय नेक्स्ट व्लॉग। आई लिव इन कोची।